In today's video, we are going to discuss mathematics of class 9th, and this is our lesson number 6, and name of the lesson is what? Lines and angles. In our previous video, we were discuss about lines, line segment, rays, collinear, non-collinear, then about the angles. And in angles we will discuss about the different types of angles, like what? Acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, after straight angle, reflex angle, and reflex angle is a very important concept, complete angle, then adjacent angles, and after adjacent angle we will discuss complementary angles. Now in this video we are going to proceed concept of this first chapter. Okay, our next angle is what? Supplementary angles. Look here in the figure, this is angle AOB, named as, measurement is as theta, and this is angle BOC, measurement as phi, and sum of these two angles is equals to what? 180 degree. 180 degree is a straight angle. Okay, sum of these two angles is equals to 180 degree. Now come to the definition. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Now here angle AOB plus angle BOC is equals to angle AOB plus angle BOC is equals to 180 degree, means theta plus phi is equals to 180 degree. So this is clear that when the sum of two angles is 180 degree, then that two angles are known as what? Supplementary angle. Now the question is this: if in supplementary angles we know anyone and we want to find the another one, then how will do it? Okay, मतलब कि अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स में से कोई एक एंगल का मेजरमेंट पता है और दूसरा एंगल आपको कैलकुलेट करना है, देन हाउ यू विल फाइंड दैट एंगल? सपोज one angle is theta and you have to find the supplementary angle of this theta, then just you have to subtract theta from 180 degree. आपको 180 डिग्री में से थीटा क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वन एंगल इज अ 70 डिग्री एंड फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, तो आप क्या करेंगे? you have to subtract 70 degree from 180 degree. When you subtract the 70 degree from 180 degree, you will get what? 110 degree, means supplementary angle of 70 degree is 110 degree. Now you can say what? 70 degree and 180 degree are the supplementary angles. Okay, now this is the concept of supplementary angle. In previous turn we were discuss about the complementary angle. On that we discuss what? Sum of the two angle is 90 degree, then that angles are known as complementary angle. Now next thing is linear pair of angles. This is the figure. Here is the first arm OA, second OB, and third OC. Actually AOC is a line and OB, arm OB is standing on the line AOC. So these two angles, because this is a line and on line sum of total angle is what? 180 degree. एक लाइन पे कितने भी एंगल्स बने, लेकिन उन सारे एंगल्स का सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. बट बिकॉज
Here on a line only one ray is standing. That's why formed two angles. First angle is angle AOB and second angle is angle COB or BOC. Both angles are called linear pair of angles. Okay, look here. If sum of two adjacent angles are 180 degree, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, दैट इज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। यहाँ पे आपने ध्यान से देखा कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं कौन कौन सी, ओ ए एंड ओ सी, इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक लाइन फॉर्म किया। दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर। Angle AOB and angle COB are linear pair. That's why sum of both angle is 180 degree. I think linear pair का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट है और यहाँ से कुछ डिफरेंट 2 3 4 रेज जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे, दिस फर्स्ट एंगल, दिस सेकेंड एंगल, दिस थर्ड एंगल एंड दिस फोर्थ एंगल, इन सब एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री ऑन अ लाइन। सम ऑफ द ऑल फॉर्म्ड एंगल्स is 180 degree. Okay, because on a straight line straight angle is 180 degree. Now come to the next one, vertically opposite angles. Look here in the figure, this is the line AB, this is the line CD, and both lines intersecting at the point O, means point O is called intersection of line AB and line CD. Clear? And when these two lines intersects, there are total 4 angles formed. First is angle AOD, then second is angle BOD, then third is angle BOC, and then fourth is angle AOC. How many angles? 1 2 3 4. You can write it angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Okay, now look here, when two lines intersect each other, then vertically opposite angles formed. जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कौन सी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स, तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स मिलेंगे दीज एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 के अपोजिट में एंगल 3 है, सो एंगल 1 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 के अपोजिट में एंगल 4 है, सो एंगल 2 एंड एंगल 4 आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ देयर आर 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Here first is what, angle AOD and angle BOC, मतलब angle 1 and angle 3. Second is angle BOD and angle AOC. This is the second pair, are pair of vertically opposite angles and they are equal. ठीक है, ये हमारे क्या हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। हियर दैट इज एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज clear to you. Now come to the next topic. Our next topic is what, intersecting line. This is the from line. If two lines have one common point between both of them, then it is called intersecting lines.
हियर ओ इज़ अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। फर्स्ट लाइन इज दैट। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी लाइन के एक दोनों साइड पे ए और बी नाम लिख करके उसको हम लाइन ए बी कह सकते हैं, तो उसके सिर्फ एक साइड पे हम स्मॉल लेटर में एल एम एन ये सब लिख करके भी उसकी नेमिंग कर सकते हैं। दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम एंड बोथ इंटरसेक्टिंग एट वेयर पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ओ इज अ कॉमन पॉइंट फॉर द लाइन एल एंड लाइन एम। ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, these two lines L and M not having any common point, that's why these two lines are known as non-intersecting line। either अभी तो ये आपको नॉन इंटरसेक्टिंग दिख रही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो कि देखने से तो लगती हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अगर उनको हम आगे पीछे एक्सटेंड करें तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती हैं। फिर उन लाइन को हम नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं कह सकते हैं। अगर वो आगे पीछे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो फिर वो नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइंस जो दिख भी रही हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग है और अगर हम उनको आगे पीछे एक्सटेंड भी करते हैं तब भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तब हम उन लाइंस को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड एक्चुअली में ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्योंकि उन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है। लुक हियर, इफ टू लाइंस हैज नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन देम, पहली बात तो दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज सेम, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, देन इट इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। हियर L and M both are parallel lines, that is L parallel M. This is the sign to represent the parallel, L parallel M. Okay, note these 2 points. First is, if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। ये चीज़ आपने कहाँ देखा था, लीनियर पेयर में। if the sum of two adjacent angles is 180 degree, अगर किन्हीं दो adjacent angles का सम कितना है 180 डिग्री है, then the non common arms of a angle form a line। मतलब कि ये भी एक तरीके से बात की गई हम लोगों से लीनियर पेयर की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग, मैंने आपसे ये तो कह दिया कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड बोथ आर इक्वल, बट वी नीड अ प्रूफ। हम ऐसे कैसे मान लें कि हाँ जब दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो मतलब कि उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हम इस चीज़ को ऐसे मान कैसे लें? वी नीड टू प्रूव इट। ओके, नाउ फॉर दिस प्रूफ there is an theorem, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal, you have to prove it. Okay, you means we have to prove it. Here, look here in figure, this is line AB, this is line CD, both are intersecting at the point O, vertically opposite angles are formed, angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. This is my suggestion to you that जब भी कभी एंगल्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं तो आप उनको 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग करके लिख लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा वो कन्वीनियंट होगा लिखना। अब जैसे इस एंगल 1 को हम कहें तो ये है एंगल AOC, इसका अगर हम पूरा नाम लें तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC। AOC लिखने के कंपैरिजन में एंगल 1 लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप लिखेंगे एंगल AOC तो इस तरीके से आएगा एंगल AOC, ठीक है, या इसी की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये मेरा सजेशन है, अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, हियर गिवन दैट AB एंड CD आर टू लाइन्स, दो लाइन्स हैं विच इंटरसेक्ट एट O, जो कि पॉइंट O पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एंड फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, एंगल 1 and 3,
angle AOD and angle BOC, angle 2 and 4, ये दोनों vertically opposite angles हैं and we have to prove it that both angles are equal. Okay, now come to the proof. We have to draw the figure again, just because of do not turn page too many times. This is line AB, this is line CD, this is the angle vertical opposite, this is the angle vertical opposite, this is point O. Okay, intersecting point. We have to prove what? We have to prove angle AOC, this angle AOC is equals to angle BOD, first thing, and second thing we have to prove angle AOD is equals to angle BOC. Okay, here we have to prove just for one, means फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी एक को हम प्रूव कर देंगे और सेकंड के लिए हम लिख देंगे सिमिलरली दिस वन ऑल्सो, मतलब सेकंड के लिए प्रूफ करके दिखाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना. कम टू फिगर, हियर दिस AB इज अ लाइन and on line AB ray OD is standing. Okay, this AB is a line and on line AB ray OD is standing. Okay, ray OD stand on AB, और जब लाइन AB पे रे OD स्टैंड कर रहा है तो लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा. दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल BOD is equals to 180 degree. Equation number 1, and this thing is done by what? By linear pair. Okay, now this is the line CD, this one is a line CD, and ray OB is standing on line CD. Okay, this is the line CD and ray OB is standing on the line CD. That's why sum of these two angle is also 180 degree. Angle BOD plus angle BOC is equals to 180 degree, and this thing is also done by what? By linear pair. जो चीज़ हमने किया वो कहाँ से किया, क्यों किया, इस चीज़ को साइड में ब्रैकेट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we are getting? In equation 1 RHS is 180 degree, in equation 2 RHS is 180 degree. From both equation, if we are getting that RHS of both equation are 180 degree, it means that if RHS are equal then LHS is also equal. This 180 degree is equals to 180 degree, it means this LHS is also equal, means angle from equation 1 and 2, angle AOD plus angle BOD is equals to angle BOD plus angle BOC. You can cancel what? Angle BOD by angle BOD, you get what? Angle AOD is equals to angle BOC, this one, second. And now there is no need to prove the first one also. You can write just similarly angle AOC is equals to angle BOD. But if you want to prove it, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि यार सर तो प्रूफ करने ही नहीं दे रहे हैं, आधे पे कर दिया, आधा छोड़ दिया, आधा पार्ट, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट व्हाट? दिस इज लाइन AB and on AB ray OC is standing. That's why sum of angle AOC plus angle BOC is equals to what? 180 degree. Clear? Equation 1 हो जाएगा. And this is line CD, and on line CD ray OA is standing. So angle this and this means angle AOC plus angle AOD is equals to, ये भी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा. अब उसको इक्वेशन 2 कह दोगे, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बिकॉज RHS आर इक्वल, दैट्स वाई LHS
will also equal. आप LHS इक्वल करोगे, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी AOC इस एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, ये आपका प्रूफ हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द basic concept of the lesson number 6, starting basic concepts. These are, and with the help of these basic concepts we can proceed our first exercise from the NCERT book. But first of all we have to solve the solved examples, because importance of solved examples is also here. You have to know the solved example solution very clearly. In NCERT books questions are solved, means some examples are solved, because examples always solved. But sometimes to clear the concept it is very necessary the explanation of that examples. So in you have to do that examples also. Then we will start the exercise 6.1 from your NCERT textbook, and revise this video and previous video also. You have to know the all concept related these both videos, because by when you clear these concept of these two videos, then we can proceed for the next exercise and so on. Okay, so complete this video.